कहानी का शीर्षक मांगा के पैरों का स्पर्श। भाग 1। आशा की एक चिंगारी। मैं तुम्हारी बेटी के पैर धोऊंगा और वह फिर से चलने लगेगी। यह सुनकर धनी व्यापारी श्रीमान विक्रम हंस पड़ा, पर उसका दिल सहसा जम गया। 2 साल से विक्रम को चैन की नींद नहीं आई थी। उसकी इकलौती बेटी अन्नू व्हीलचेयर पर थी, क्योंकि मस्तिष्क की सूजन ने उसके पैरों की गति छीन ली थी। दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टरों की फौज विक्रम के लोधी गार्डन वाले आलीशान घर में आ जा चुकी थी, पर 5 साल की उस नन्ही परी को फिर से चलने लायक बनाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। एक मंगलवार की सुबह जब व्यापारी अपनी बेटी के साथ एक और डॉक्टर से मिलने के लिए निकल रहा था, उसने अपनी कोठी के गेट पर लगभग 8 साल का एक काला सा दिखने वाला लड़का खड़ा देखा। लड़के ने एक फीकी लाल टी-शर्ट पहनी हुई थी और व्हीलचेयर पर बैठी अन्नू को घूर रहा था। विक्रम गाड़ी तेज करने ही वाला था कि लड़का खिड़की के पास आ गया। हुजूर, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? लड़के की आवाज में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता थी। विक्रम ने कांच नीचे किया, ज्यादातर जिज्ञासा से, असली रुचि से नहीं। लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जो ध्यान खींचता था, एक ऐसी गंभीरता जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। क्या चाहिए बच्चे? मुझे जल्दी है। मैंने उस लड़की को व्हील चेयर पर देखा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसके पैर धो सकता हूं और वह फिर से चलने लगेगी। विक्रम जोर से हंसा, लगभग उपहास करते हुए। यह तो बेतुकेपन की हद थी। लाखों रुपए के इलाज पर खर्च करने के बाद एक सड़क का लड़का चमत्कारी इलाज का प्रस्ताव लेकर आ गया था। सुनो बच्चे, तुम किस तरह का धोखा करने की कोशिश कर रहे हो? यह धोखा नहीं है हुजूर। मेरी दादी माँ ने मुझे कुछ नुस्खे सिखाए थे। वह बहुत समय से यहाँ के लोगों का इलाज करती थीं। मैं जड़ी बूटियों से पैरों की मालिश करना जानता हूँ, जिससे व्यक्ति फिर से चलने लगता है। विक्रम हंसना बंद कर दिया जब उसने लड़के के चेहरे का भाव देखा। वहां कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही पैसे कमाने की कोई आसान उम्मीद। कुछ गहरा था, एक पूर्ण विश्वास जिसने व्यापारी को कुछ पलों के लिए कंपा दिया। अन्नू, जो अब तक खामोशी से व्हील चेयर पर बैठी सब देख रही थी, आगे झुकी और उत्सुकता से लड़के को देखा। पापा, यह कौन है? उसने अपनी मीठी आवाज में पूछा। नमस्ते राजकुमारी, मेरा नाम है मांगा राम, और तुम अन्नू हो, है ना? विक्रम हैरान रह गया। यह मेरे बेटी का नाम कैसे जानता है? इसका नाम कैसे पता? अरे हुजूर, यहां सब जानते हैं। जो अंकल चाट की दुकान पर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि व्यापारी के बेटे की बेटी बीमार हो गई है और चल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आप बहुत दुखी रहते हैं। व्यापारी के सीने में एक चुभन सी हुई। उसे पता नहीं था कि उसका दर्द पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। वह हमेशा चीजों को निजी रखने की कोशिश करता था, पर लगता था कि गपशप उसकी गोपनीयता से तेज भाग रही थी। पापा, क्या यह मेरी मदद कर सकता है? अन्नू ने उस मासूमियत से पूछा जो हमेशा उसके पिता का दिल पिघला देती थी। बेटी, यह इतना आसान नहीं है। हुजूर, आपका कुछ नहीं जाता। मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। मुझे बस एक टब में गुनगुना पानी और कुछ पौधे चाहिए। अगर काम नहीं आया तो आप मुझे भगा दीजिएगा बस। पर अगर काम आया? मांगा ने रुककर विक्रम की आंखों में देखा। अगर काम आया तो राजकुमारी फिर से दौड़ने लगेगी। विक्रम के सीने में कुछ अजीब सा हुआ, एक उम्मीद और निराशा का मिश्रण जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। सभी डॉक्टर एक मत थे, अन्नू के फिर से चलने की संभावना लगभग शून्य थी। मस्तिष्क की सूजन ने तंत्र को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाया था। तुम कहां से हो बच्चे? तुमने ये नुस्खे कहां से सीखे? मैं पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले में रहता हूं हुजूर। मेरी दादी माँ, जिन्हें सब दादी माँ कहते थे, वह जड़ी बूटी से इलाज करती थीं। जब मैं छोटा था, वह मुझे अपने साथ ले जाती थीं और मुझे सब सिखाती थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे हाथों में जादू है। और तुम्हारी दादी माँ अब कहाँ हैं? लड़के का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया। वह 3 महीने पहले चली गईं हुजूर। वह बहुत बीमार हो गईं और खुद का इलाज नहीं कर पाईं। पर जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं लोगों की मदद करना जारी रखूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं यह ज्ञान अपने साथ खत्म नहीं होने दे सकता। विक्रम को एहसास हुआ कि लड़का अनाथ है। यह उसके फटे पुराने कपड़ों और थोड़ी खोई सी हालत की व्याख्या करता था, पर साथ ही उसमें एक प्रभावशाली दृढ़ संकल्प था। और तुम पक्के तौर पर मेरी बेटी की मदद कर सकते हो? सच में? सिर्फ भगवान जानता है हुजूर। पर मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी कि जब व्यक्ति ठीक होना चाहता है और परिवार विश्वास करता है तो पौधे और मालिश ज्यादा असर करते हैं। विश्वास शरीर को ठीक होने में मदद करता है। अन्नू खुशी से ताली बजाने लगी, बातचीत से उत्साहित होकर। पापा, चलिए कोशिश करते हैं। प्लीज,
मैं चाहती हूं कि वह मेरे पैर धोए। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा, फिर लड़के को, और एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ठीक है, पर हम इसे सही ढंग से करेंगे। गाड़ी में बैठो, हम घर चलकर मेरी पत्नी से बात करेंगे। मांगा एक पल के लिए हिचकिचाया। आप पक्के हैं? मैं गरीब हूं हुजूर, आपको परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम सच में मेरी बेटी की मदद कर सकते हो तो तुम इस परिवार के लिए कभी परेशानी नहीं बनोगे। कोठी का फाटक खुला और गाड़ी धीरे धीरे अंदर गई। मांगा विशाल घर को देखकर दंग रह गया, जहां सुबह की धूप में चमकते बाग और स्विमिंग पूल थे। यह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया थी। गैरेज में पहुंचकर विक्रम ने अन्नू को गाड़ी से उतरने में मदद की और उसे फिर से व्हील चेयर पर बिठाया। मांगा ध्यान से लड़की की हर हरकत को देख रहा था, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण कर रहा हो। क्या तुम्हें अपने पैर महसूस होते हैं राजकुमारी? लड़के ने झुककर लड़की की आंखों के स्तर पर आकर पूछा। कभी कभी अजीब सी चुभन होती है, पर मैं उन्हें हिला नहीं सकती। यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि नसें पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुई हैं। मेरी दादी माँ हमेशा कहती थीं कि जब व्यक्ति को कुछ महसूस होता है तो सुधार की गुंजाइश होती है। वे घर के अंदर गए और विक्रम ने अपनी पत्नी मोनिका को आवाज दी। वह ड्राइंग रूम में एक मैगजीन पढ़ रही थी, अपनी बेटी की समस्या से लगातार महसूस हो रही चिंता को दूर करने की कोशिश कर रही थी। मोनिका, मैं तुम्हें मांगा से मिलवाना चाहता हूं। यह कहता है कि यह अन्नू की मदद कर सकता है। मोनिका ने मैगजीन से नजरें उठाईं और लड़के को देखा। उसकी पहली प्रतिक्रिया संदेह की थी। कुछ मेल नहीं खा रहा था। विक्रम एक अनजान बच्चे को घर क्यों लाया था? मदद कैसे? जैसा विक्रम कह रहा है, यह कहता है कि उसे पैरों की खास मालिश आती है जिससे हमारी बेटी फिर से चल सकती है। मोनिका ने कड़वी हंसी हंसी। विक्रम, प्लीज, इन सब के बाद तुम किसी सड़क के बच्चे पर विश्वास करोगे? लड़का सम्मानपूर्वक पर दृढ़ता से आगे बढ़ा। मैडम, मैं आपका संदेह समझता हूं, पर मेरी दादी माँ ने कई लोगों को राजकुमारी जैसी ही समस्याओं में ठीक किया है। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है जिसमें सारे नुस्खे और मालिश के तरीके लिखे हैं। अगर आप चाहें तो उसे देख सकती हैं। लड़के ने अपनी शॉर्ट्स की जेब से एक छोटी चमड़े की कवर वाली नोटबुक निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और हाथ से लिखी हुई थीं। मोनिका ने नोटबुक ली और पन्ने पलटने लगी। उसमें पौधों के चित्र, अजीब नामों वाले नुस्खे और पैरों व टांगों के दबाव बिंदुओं के बारे में विस्तृत निर्देश थे। आपकी दादी माँ को यह सब ज्ञान कहाँ से मिला? यह उन्हें उनकी दादी माँ से मिला और उनकी दादी माँ से। हमारा परिवार हमेशा से इस ज्ञान को संजोता आया है मैडम, पर मैं ही आखिरी हूं। अगर मैं इस ज्ञान का उपयोग नहीं करूंगा तो यह मेरे साथ खत्म हो जाएगा। लड़के की सादगी और सच्चाई ने मोनिका को गहराई से छू लिया। उसने अन्नू को देखा जो सब कुछ ध्यान से देख रही थी, और फिर विक्रम को। और तुम यह सब यहाँ घर पर ही करना चाहते हो? मुझे बस एक बड़ा टब, गुनगुना पानी और कुछ पौधे चाहिए। आपके बगीचे में पुदीना और रोजमेरी है? हाँ है, पर यह एक अच्छी शुरुआत है। मेरी दादी माँ कहती थीं कि ये पौधे सोई हुई नसों को जगाने में मदद करते हैं। विक्रम बीच में बोला। मोनिका, हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमने सब कुछ आजमा लिया है। डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरेपी, कुछ भी काम नहीं आया। पर विक्रम, क्या होगा अगर यह हमारी बेटी को चोट पहुंचाए? क्या होगा अगर यह कोई चाल हो? माँ, अन्नू ने उस आवाज में कहा जो हमेशा अपने माता पिता को किसी भी चीज के लिए मना लेती थी। मैं यह कोशिश करना चाहती हूं। इससे दर्द तो नहीं होगा? मांगा, नहीं राजकुमारी, बिल्कुल नहीं। बस गुनगुने पानी और पौधों की अच्छी महक का एहसास होगा। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी महसूस हो तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा। मोनिका ने गहरी सांस ली। महीनों पहले ही उसने मेडिकल उम्मीदें छोड़ दी थीं। शायद अब कुछ अलग आजमाने का समय आ गया था। ठीक है, पर कुछ शर्तों पर। पहला, हम यह सब अन्नू के कमरे में करेंगे जहां वह सुरक्षित महसूस करती है। दूसरा, मैं हर समय उसके साथ रहूंगी। और तीसरा, जैसे ही कुछ गलत लगे हम सब बंद कर देंगे। मांगा पहली बार मुस्कुराया। ठीक है मैडम, आप देखेंगी, सब ठीक होगा। विक्रम ने लड़के की ओर रुख किया। मांगा, तुम्हारा सोने का इंत बेरूपा क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं हुजूर। मेरी माँ मुझे 5 साल का होने पर छोड़ गई थी। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। मेरे पास सिर्फ मेरी दादी माँ थी, और अब वह भी नहीं रही। और तुम कहाँ सोते हो? मांगा ने शर्म से सिर झुका लिया। एक फ्लाईओवर के नीचे, चाट की दुकान के पास। मैं कुछ गत्ते इकट्ठा कर लेता हूं और रात गुजार लेता हूं। मोनिका का दिल बैठ गया। 8 साल का बच्चा सड़क पर सो रहा था। विक्रम, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं जानता हूं मांगा,
क्या हो अगर तुम यहाँ हमारे घर में ही रुको जब तक तुम हमारी बेटी की मदद कर रहे हो। हमारे पास नौकरों का एक कमरा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा। मांगा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आप मजाक कर रहे हैं? क्या मैं सच में यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, पर एक शर्त पर। तुम पढ़ाई करोगे? हम तुम्हें यहाँ के एक स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ। हुजूर, मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाया था। वह कहती थीं कि ज्ञान ही ऐसी चीज है जो कोई चुरा नहीं सकता। अन्नू खुशी से ताली बजाने लगी। कितना अच्छा, अब मेरा एक भाई होगा। सब हंस पड़े और महीनों बाद पहली बार विलारियाल के घर में उम्मीद का माहौल छाया। भाग 2, उपचार की यात्रा। अगले दिन मांगा विलारियाल परिवार के घर में उठा। उसने बिस्तर पर साफ चादरों और नरम तकिए के साथ अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रात बिताई थी। नहाने और मोनिका द्वारा खरीदे गए नए कपड़े पहनने के बाद वह नाश्ते के लिए नीचे आया। सुप्रभात परिवार, उसने खुशी से कहा। सुप्रभात मांगा, अन्नू ने जवाब दिया, जो पहले से ही अपनी व्हील चेयर में बैठी उपचार के लिए उत्सुक थी। हम कब शुरू करेंगे? नाश्ते के ठीक बाद राजकुमारी, पर पहले मुझे पौधों को अच्छी तरह तैयार करना होगा। तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं बगीचे से रोजमेरी और पुदीना ले सकता हूँ। नाश्ते के बाद मांगा विलारियाल के बगीचे में गया। यह एक विशाल जगह थी जिसमें अच्छी तरह से कटी हुई घास, रंगीन फूल और कई फलों के पेड़ थे। बच्चे ने कभी इतनी प्रचुर मात्रा में वनस्पति एक निजी जगह पर नहीं देखी थी। उसने सावधानी से रोजमेरी और पुदीने की टहनियां चुनी, हर एक को काटने से पहले सूंघा। मोनिका खिड़की से देख रही थी, उस ज्ञान से प्रभावित थी जो बच्चा पौधों के बारे में दिखा रहा था। माँ, मंगा को पता है कि वह क्या कर रहा है, अन्नू ने कहा। उम्मीद तो यही है बेटी। जब मंगा घर लौटा तो उसके हाथ में सुगंधित जड़ी बूटियों का एक छोटा गुच्छा था। उसने एक बड़ा टब, साफ तौलिए और गुनगुना पानी मांगा। अब मैं पौधों की चाय तैयार करूंगा जिसे पानी में मिलाया जाएगा, उसने पत्ते अलग करते हुए समझाया। मेरी दादी माँ हमेशा कहती थीं कि हर पौधे की अलग शक्ति होती है। रोजमेरी रक्त संचार को जगाता है, पुदीना सूजी हुई नसों को शांत करता है। विक्रम दूर से देख रहा था, संशयवादी, पर क्या होगा यह देखने के लिए उत्सुक। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नर्स को काम पर रखा था कि अगर कुछ गलत हो तो कोई मौजूद हो। मांगा ने पौधों से एक बहुत तेज काढ़ा तैयार किया और उसे गुनगुने पानी के टब में मिला दिया। कमरे में फैली सुगंध एक साथ स्फूर्तिदायक और शांत करने वाली थी। तैयार हो राजकुमारी? लड़के ने व्हीलचेयर के पास घुटने टेककर पूछा। अन्नू ने हाँ में सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से उत्सुक पर विश्वास से भरी। मांगा ने बहुत सावधानी से लड़की के पैरों पर अपने हाथ रखे और धीरे धीरे उसके जूते और मोजे उतारे। मोनिका ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, अपनी चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं तुम्हारे पैरों को गर्म पानी में रखूंगा। तुम्हें शायद कुछ अजीब महसूस हो, पर यह सामान्य है, ठीक है? लड़के ने अन्नू के पैरों को उठाया और धीरे से उन्हें पानी के टब में रख दिया। लड़की ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। यह गर्म है और इसकी महक बहुत अच्छी है। मांगा ने मालिश शुरू की, अपनी दादी माँ से सीखी हुई सटीक निर्देशों का पालन करते हुए। उसकी उंगलियां छोटी पर मजबूत अन्नू के पैरों के तलवों और टखनों पर विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डाल रही थीं। कुछ अलग महसूस हो रहा है राजकुमारी? हाँ, महसूस हो रहा है, जैसे झुनझुनी हो रही है। अजीब है, पर दर्द नहीं होता। मोनिका ने विक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण नजरें बदलीं। अन्नू ने महीनों से अपने पैरों में कोई भी संवेदना नहीं बताई थी। मांगा ने लगभग 20 मिनट तक मालिश जारी रखी, लड़की के साथ लगातार मजेदार कहानियां सुनाते हुए जो उसकी दादी माँ मरीजों को विचलित करने के लिए सुनाती थीं। मेरी दादी माँ कहती थीं कि शरीर बहुत बुद्धिमान होता है, कभी कभी इसे सही काम करने के लिए बस एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है। पहले सत्र के समाप्त होने पर मंगा ने अन्नू के पैरों को सावधानी से सुखाया और उन्हें गर्म तौलिए में लपेट दिया। तो कैसा महसूस हो रहा है? पैरों में अलग महसूस हो रहा है, जैसे वे ज्यादा जिंदा हों। विक्रम आगे बढ़ा। मंगा, तुम यह कितनी बार करने की सोच रहे हो? मेरी दादी माँ हमेशा इसे दिन में 2 बार करती थीं, एक सुबह और एक शाम। वह कहती थीं कि नसों को जगाने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है और परिणाम देखने में कितना समय लगता है यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। हुजूर, मेरी दादी माँ ने जिन मामलों का इलाज किया था उनमें से कुछ दिनों में ही सुधार हो गया, दूसरों को हफ्ते लगे, पर हमेशा कुछ न कुछ सुधार होता था। उसी दोपहर दिन के दूसरे सत्र के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब मंगा अन्नू के दाहिने पैर की मालिश कर रहा था तो उसने आश्चर्य से चीख मारी। क्या हुआ बेटी? मोनिका चिंता से उसकी ओर दौड़ी। मैंने महसूस किया
मैंने महसूस किया कि वह मेरे पैर को छू रहा है। यह सिर्फ झुनझुनी नहीं है माँ, मैंने सच में उसका हाथ महसूस किया। सब एक पल के लिए सन्नाटे में आ गए। विक्रम अपनी बेटी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। क्या तुम पक्की हो अन्नू? हाँ, मैं पक्की हूं पापा। मांगा, फिर से करो। लड़के ने फिर से लड़की के पैर पर उसी बिंदु पर दबाव डाला। आह, मैंने फिर से महसूस किया, सच में महसूस किया। मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। 2 सालों में यह सुधार का पहला ठोस संकेत था। मांगा मुस्कुराया, पर शांत रहा। यह एक अच्छा संकेत है राजकुमारी, पर अब धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। शरीर को ठीक होने में समय लगता है। उस रात के खाने के दौरान अन्नू पैरों की संवेदनाओं के बारे में बात करती रही जो उसने महसूस की थी। मंगा, तुमने यह सब कैसे सीखा? क्या तुम्हारी दादी माँ डॉक्टर थीं? नहीं राजकुमारी, वह स्कूल में डॉक्टरों की तरह नहीं पढ़ती थीं, पर वह ऐसी बातें जानती थीं जो स्कूल नहीं सिखाता। वह कहती थीं कि उन्होंने जीवन और पौधों से सीखा। विक्रम पूरे खाने के दौरान सोच में डूबा रहा। मांगा, मैं कल तुम्हें एलेना से मिलवाना चाहता हूं, जो अन्नू की फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि वह जाने कि तुम क्या कर रहे हो। क्या वह मेरे मरीज को छूने के लिए मुझ पर गुस्सा करेंगी? वह शुरुआत में इसे अजीब मान सकती हैं, पर अगर तुम सच में हमारी बेटी की मदद कर रहे हो तो वह समझना चाहेंगी। मोनिका सहमत हुई। यह महत्वपूर्ण है कि हमें पेशेवर निगरानी मिले। मांगा, ऐसा नहीं है कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते, पर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। मैं समझता हूं मैडम। मेरी दादी माँ कहती थी कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना कभी गलत नहीं होता। अगली सुबह विक्रम मंगा और अन्नू को एलेना ओरोस्को की क्लिनिक में ले गया, जो एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट थीं और 1 साल से अधिक समय से लड़की के केस को संभाल रही थीं। एलेना 50 साल की, काले बाल एक जोड़े में बंधे हुए, एक गंभीर मुद्रा में थीं जो थोड़ी डराने वाली थी। जब उन्होंने विक्रम को मंगा के साथ आते देखा तो उनके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव आया। विक्रम, यह बच्चा कौन है? एलेना, यह मंगा है। यह अन्नू के इलाज में मदद कर रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मदद कर रहा है? कैसे? विक्रम ने संक्षिप्त रूप से बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। एलेना बढ़ती अविश्वसनीयता के साथ सुन रही थी। विक्रम, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने एक बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग वाले बच्चे को अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत दी? एलेना, अन्नू ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई और देखिए, उसने एक स्पष्ट प्रयास करते हुए अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाया। एलेना का मुंह खुला रह गया। 1 साल के इलाज में अन्नू कभी भी अपने पैरों के साथ कोई भी स्वैच्छिक हरकत करने में कामयाब नहीं हुई थी। कैसे? यह कैसे संभव है? मांगा विनम्रता से पर दृढ़ता से आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाया कि पैरों में ऐसे बिंदु होते हैं जो टांगों की नसों को जगाते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों का इलाज किया, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह असंभव है कि साधारण मालिश से तंत्रिका संबंधी क्षति उलट जाए। शायद यह सिर्फ मालिश नहीं है डॉक्टर। मेरी दादी माँ कहती थीं कि जब व्यक्ति को विश्वास होता है कि वह ठीक हो जाएगा तो शरीर भी मदद करता है। एलेना ने अन्नू की जांच करने को कहा। कुछ परीक्षणों के बाद उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि पिछले परामर्श की तुलना में कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस थे जो मौजूद नहीं थे। यह असामान्य है। उन्होंने खुद से ज्यादा बुदबुदाया। डॉक्टर, विक्रम ने कहा, मैं आपसे मंगा के तरीकों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप मेरी बेटी की प्रगति की निगरानी करें और मुझे बताएं कि क्या कोई जोखिम है। एलेना ने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि परिणाम आश्चर्यजनक हैं, पर मैं जोर देती हूं कि नजदीकी निगरानी रखी जाए। मैं अपनी मरीज को जोखिम में नहीं डाल सकती। आप पूरे विश्वास के साथ निगरानी रख सकते हैं डॉक्टर, मांगा ने कहा। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मालिश भी सिखा सकता हूं। फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे की उदारता से आश्चर्यचकित हुई। तुम मुझे सिखाओगे? जरूर। मेरी दादी माँ हमेशा कहती थीं कि वह ज्ञान जो साझा नहीं किया जाता वह खोया हुआ ज्ञान है। उस दिन से एलेना नियमित रूप से विलारियल के घर आने लगी। मंगा को देखते हुए और उससे सीखते हुए वह बच्चे की सटीकता और शारीरिक ज्ञान से प्रभावित हुई, भले ही उसने कभी चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया था। मंगा, तुम्हारी दादी माँ वास्तव में एक्यूप्रेशर के बहुत विशिष्ट बिंदुओं को जानती थीं। उन्होंने एक शाम मालिश सत्र देखने के बाद टिप्पणी की। एक्यूप्रेशर क्या होता है? डॉक्टर, यह एक बहुत पुरानी पूर्वी तकनीक है जो उपचार को उत्तेजित करने के लिए
शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव का उपयोग करती है। तुम जो करते हो वह बहुत मिलता जुलता है, पर इसमें पारंपरिक मैक्सिकन चिकित्सा के तत्व भी शामिल हैं। मंगा को यह जानकर गर्व हुआ कि उसकी तकनीकों का एक वैज्ञानिक नाम था। तो मेरी दादी माँ बुद्धिमान थी, है ना डॉक्टर? बहुत बुद्धिमान, मंगा। और तुम भी, उनसे इतनी अच्छी तरह सीखने के लिए। हफ्ते बीत गए और अन्नू धीरे धीरे बेहतर होती रही। पहले उसने अपने पैरों में पूरी तरह से सनसनी फिर से हासिल कर ली। फिर वह अपने पैर की उंगलियों को ज्यादा आसानी से हिलाने लगी। फिर वह लेटते समय अपने घुटनों को मोड़ पाने में कामयाब हो गई। हर बिया छोटी प्रगति के साथ परिवार ऐसे झूम उठता जैसे कोई बड़ी जीत हो, और उनके लिए यह वास्तव में वही थी। मांगा विलारियाल के आलीशान घर में जीवन के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। विक्रम ने अपना वादा निभाया और उसे पास के एक निजी स्कूल में दाखिला दिला दिया। लड़का एक समर्पित छात्र था, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक। मोनिका, विक्रम ने एक रात बच्चों के सोने जाने के बाद कहा, क्या तुमने गौर किया कि मंगा के आने के बाद से हमारा घर कितना बदल गया है? बदल गया है? कैसे? यह ज्यादा जीवंत हो गया है। हंसी है, उम्मीद है, मैं खुद भी बेहतर सो पा रहा हूं। मोनिका ने सिर हिलाया। उसने हमारे परिवार के लिए कुछ खास लाया है। यह सिर्फ अन्नू का इलाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने हमारे दिनों में रोशनी ला दी हो। जानती हो मैं क्या सोच रही थी? क्या हम मांगा को आधिकारिक तौर पर गोद क्यों न ले लें? मांगा मुस्कुराई। मैं भी यही सोच रही थी। वह वैसे भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। अगले दिन विक्रम ने मंगा को एक गंभीर बातचीत के लिए बुलाया। मंगा, मोनिका और मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि क्या तुम आधिकारिक तौर पर हमारे बेटे बनना चाहोगे, अन्नू के भाई बनकर हमेशा के लिए। मांगा कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सच में कह रहे हैं? बहुत गंभीर बात है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम सब कुछ कागजों पर कर देंगे। तुम्हारा हमारा उपनाम होगा और तुम हमेशा के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे। मंगा खुशी के आंसुओं में रोते हुए विक्रम को गले लगाने दौड़ा। हाँ, मैं चाहता हूं पिताजी। उसने अपने जीवन में पहली बार पिताजी शब्द का इस्तेमाल किया। मोनिका भी भावुक होकर गले मिली। परिवार में स्वागत है मेरे बेटे। अन्नू, जिसने सब कुछ ड्राइंग रूम से सुना था, खुशी से चिल्लाई, अब मेरा सच में एक भाई होगा। पर परिवार की खुशी कुछ हफ्तों बाद परीक्षा में पड़ गई। एक उपचार सत्र के दौरान अन्नू ने किसी को बताए बिना खुद को उठाने की कोशिश की। वह अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। उसका घुटना जमीन पर टकराया। गिरना कोई गंभीर बात नहीं थी, पर इससे एक खरोंच आ गई जिसने सबको डरा दिया। मोनिका घबरा गई। विक्रम, क्या हम बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? क्या मांगा हमारी बेटी को किसी असंभव चीज में विश्वास दिला रहा है? नहीं विक्रम, मैं शांत नहीं रह सकती जब मैं अपनी बेटी को एक भ्रम के लिए चोट खाते देखती हूं। मांगा ने बगल वाले कमरे से यह बहस सुनी और बहुत बुरा महसूस किया। क्या मैं सच में मदद कर रहा हूं या सिर्फ झूठी उम्मीदें बना रहा हूं? उसने उस रात विक्रम से कहा, शायद मुझे उपचार बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी मेरी वजह से चोट खाए। मांगा, वह गिरना एक दुर्घटना थी। अन्नू बहुत उत्साहित थी और खुद उठने की कोशिश कर रही थी। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। पर क्या होगा अगर मां सही कह रही हो? क्या होगा अगर मैं सबको धोखा दे रहा हूं? विक्रम लड़के की आंखों के स्तर पर घुटने टेक कर बैठ गया। मांगा, 2 महीनों में तुमने हमारी बेटी के साथ डॉक्टरों से 2 साल में ज्यादा प्रगति की है। अन्नू ज्यादा खुश है, ज्यादा उम्मीदवान है। भले ही वह कभी फिर से न चल पाए, तुमने जो हमारी खातिर किया है वह किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। पर हुजूर, कोई पर नहीं बेटा, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। मुश्किल समय में हम साथ रहते हैं, भागते नहीं। अगली सुबह अन्नू ने अपनी मां को मना लिया कि उपचार जारी रखा जाए। मां, मुझे चोट इसलिए नहीं लगी क्योंकि मंगा ने कुछ गलत किया। मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि मैं बेवकूफ थी और खुद उठने की कोशिश की। पर पता है क्यों कोशिश की? क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर सकती हूं। मुझे महीनों से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मां, मोनिका ने अपनी बेटी को गले लगाया, अभी भी चिंतित, पर समझने लगी। क्या तुम पक्की हो कि तुम जारी रखना चाहती हो? हाँ मां, और मैं चाहती हूं कि मंगा मेरा भाई बना रहे। वह किसी भी डॉक्टर से बेहतर मेरा ख्याल रखता है। उपचार फिर से शुरू हुए, पर अब और भी ज्यादा सावधानी और निगरानी के साथ। डॉ एलेना हर सत्र में मौजूद रहती, हर प्रगति की निगरानी करती और जरूरत पड़ने पर तकनीकों को समायोजित करती। मांगा, उन्होंने एक शाम कहा, मैं शुरुआत में तुम्हें स्वीकार करने के लिए माफी मांगना चाहती हूं। मैंने तुम्हें जाने बिना तुम्हारे तरीकों को गलत समझा। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप तो बस राजकुमारी की रक्षा कर रही थीं। मैं समझता हूं,
पर अब मैं देखती हूं कि तुम्हारे पास एक वास्तविक प्रतिभा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास प्यार है। यही इलाज में सब कुछ बदल देता है। मेरी दादी माँ हमेशा यही कहती थी कि प्यार किसी भी दवा से ज्यादा ठीक करता है। भाग 3, उम्मीद का सफर। गर्मी आई और उसके साथ एक ऐसी आश्चर्यजनक चीज आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अन्नू इतनी बेहतर हो गई थी कि एलेना ओरोस्को ने सुझाव दिया कि फिजियोथेरेपी सत्रों के दौरान वह वॉकर का उपयोग करने की कोशिश करे। वॉकर? मोनिका ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, उसके पैरों की मांसपेशियां उत्तेजना पर बहुत अच्छा प्रतिक्रिया कर रही हैं। मुझे लगता है कि वजन उठाने वाले व्यायामों का प्रयास करने का समय आ गया है। मंगा यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठा। सुना राजकुमारी, तुम खड़ी हो पाओगी, पर क्या होगा अगर मैं न कर पाऊं? अन्नू ने थोड़ा डर दिखाया। तुम कर पाओगी छोटी बहन, मुझे पता है तुम कर पाओगी। वॉकर के साथ पहला परीक्षण 1 दिसंबर की सुबह हुआ। पूरा परिवार एलेना ओरोस्को और 2 नर्सों के साथ अन्नू के कमरे में इकट्ठा हुआ था। मांगा ने कोशिश से पहले मालिश का एक विशेष सत्र तैयार किया था, जिसमें उसकी दादी माँ के एक ऐसे नुस्खे का इस्तेमाल किया गया था जिसे वह सबसे महत्वपूर्ण क्षणों के लिए रखती थीं। तैयार हो राजकुमारी? अन्नू ने हाँ में सिर हिलाया, पर हर कोई उसकी आंखों में चिंता देख सकता था। बहुत सावधानी से विक्रम और मांगा ने लड़की को व्हीलचेयर से उतरने और वॉकर के पीछे खड़े होने में मदद की। उसके पैर प्रयास से कांप रहे थे, पर वे मजबूत खड़े थे। वाह, मैं खड़ी हूं, मैं सच में खड़ी हूं। खुशी के आंसू सभी उपस्थित लोगों के चेहरों पर बह निकले। अब धीरे धीरे एक कदम चलने की कोशिश करो, एलेना ओरोस्को ने निर्देश दिया। अन्नू ने इंटेंसली ध्यान केंद्रित किया, एक पैर आगे बढ़ाया और एक छोटा पर मजबूत कदम उठाने में कामयाब हो गई। मैंने कर लिया, मैं चली, लड़की उत्साह से चिल्लाई। कमरा तालियों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। मांगा ने अन्नू को गले लगाया, वॉकर को कसकर पकड़े हुए। मुझे पता था तुम कर सकती हो छोटी बहन, मुझे पता था। उस दिन से वॉकर के साथ व्यायाम दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गए। अन्नू फिर से अकेले चलना चाहती थी और वह दृढ़ संकल्प संक्रामक था। विक्रम ने अपनी बेटी के व्यायामों को आसान बनाने के लिए घर को अनुकूलित करना शुरू कर दिया। उसने गलियारों में सपोर्ट बार लगाए और सुरक्षित जगह बनाने के लिए फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित किया जहां वह अभ्यास कर सके। मोनिका ने एक शाम कहा, जब वे बगीचे में अन्नू को वॉकर के साथ अभ्यास करते देख रहे थे, मुझे नहीं पता कि आपको धन्यवाद कैसे दूं कि आपने हमारे परिवार के लिए क्या किया। आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, माँ। मांगा ने हाल के हफ्तों में मोनिका को माँ कहना शुरू कर दिया था। आपने मुझे एक परिवार दिया है, मुझे ही धन्यवाद कहना चाहिए। जानते हो, तुम्हारी दादी माँ तुम पर बहुत गर्व करेंगी, है ना? मंगा ने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। कभी कभी मुझे लगता है कि वह मेरे साथ हैं माँ, जैसे वह सब देख रही हों और मुस्कुरा रही हों। हफ्ते बीत गए और अन्नू ने लगातार प्रगति की। जल्द ही वह वॉकर के साथ लंबी दूरी तक चलने लगी। फिर उसने केवल एक छड़ी के सहारे कुछ कदम चलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अब बिना सहारे के कोशिश करने का समय आ गया है, एलेना ओरोस्को ने एक परामर्श में कहा। बिना किसी सहारे के? विक्रम ने पूछा, थोड़ा डरा हुआ। उसके पैर की मांसपेशियां पर्याप्त रूप से मजबूत हैं और समन्वय में प्रभावशाली सुधार हुआ है। बेशक, हम सब कुछ बहुत सावधानी से करेंगे। बिना सहारे के चलने की पहली कोशिश के लिए नियत दिन तनाव स्पष्ट था। मोनिका ने अन्नू के दादा दादी को आमंत्रित किया था, जो मॉन्टेरी से विशेष रूप से इस क्षण के लिए आए थे। मंगा ने अपनी दादी माँ की सभी तकनीकों का उपयोग करते हुए एक और भी विस्तृत मालिश सत्र तैयार किया। आज एक खास दिन है राजकुमारी, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ मंगा, यह सामान्य है, पर याद रखो कि तुम पहले ही खड़ी हो चुकी हो। तुम वॉकर के साथ चल चुकी हो, छड़ी के सहारे चल चुकी हो। अकेले चलना बस अगला कदम है। अन्नू ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और विक्रम का हाथ थामकर खड़ी हो गई। अब मैं तुम्हारे हाथ छोड़ूंगा, पिता ने कहा, पर तभी जब तुम तैयार महसूस करो। लड़की कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रही, अपने पैरों पर संतुलन महसूस कर रही थी। तैयार पिताजी। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी बेटी के हाथ छोड़ दिए। अन्नू कुछ सेकंड के लिए अकेली खड़ी रही, जो एक युग की तरह लगे। वह सफल हुई। मंगा चिल्लाया, अब मेरे पास आने की कोशिश करो। लड़का लगभग 2 मीटर की दूरी पर बाहें फैलाए खड़ा हो गया। अन्नू ने उसे देखा, गहरी सांस ली और पहला कदम अकेले उठाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ा लड़खड़ाते हुए पर मजबूत वह मंगा के पास पहुंची, जिसने उसे उत्साहित आलिंगन में पकड़ लिया। मैं चली, मैं अकेले चली,
कमरा तालियों, खुशी के नारों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। मोनिका खुशी से सिसक रही थी। विक्रम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अन्नू के दादा दादी खुशी से रो रहे थे। एलेना प्रशंसा से अपना सिर हिला रही थी। अपने 20 साल के पेशे में उन्होंने कभी भी इस तरह की रिकवरी नहीं देखी थी। यह लगभग चमत्कारी है। चमत्कार नहीं डॉक्टर, मंगा ने कहा, अभी भी अन्नू को गले लगाए हुए। यह प्यार है, प्यार और धैर्य। उस रात विलारियल परिवार ने जश्न मनाने के लिए एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने पड़ोसियों, घर के कर्मचारियों और यहां तक कि मांगा के स्कूल के कुछ सहपाठियों को भी बुलाया। During the party, Alejandro received an unexpected call. Hello, Alejandro. This is Dr. Sergio Valdez from the Mexican Center for Neuroscience. Alejandro knew the center's reputation. It was one of the most respected research institutions in the country. Tell me, doctor. I heard from colleagues about your daughter's exceptional recovery. I would be very interested in learning about the methods you used. Alejandro briefly explained the situation, mentioning manga and his traditional techniques. That's fascinating. Would it be possible to schedule a meeting? We are always interested in alternative methods that show proven results. Doctor, I need to talk to my family, but I can tell you our focus has always been on Ana Sophia's recovery, not on turning this into a scientific study. I understand perfectly, but think how many other families could benefit if we could scientifically understand and document these methods. That night, Alejandro spoke with Monica and Manda about the doctor's call. What do you think? I think it could be good, said Monica. If it really works, other children could be helped. Manga was thoughtful. My grandmother always said that good knowledge should be shared, but I'm afraid they'll make it too complicated. Why do you think that, son? I don't know, Dad. Sometimes I feel like doctors want to explain everything with difficult words, and then what is simple becomes complicated. Alejandro smiled. But perhaps it is important to combine your grandmother's wisdom with scientific knowledge. That way, more people could learn and help other children like Ana Sofia. If so, then it's okay. But I want it to remain simple. I want other children to be able to heal too. The meeting with Dr. Sergio was scheduled for the following week. The doctor, a man in his early 50s with graying hair and glasses, arrived at the Villarreal's house, accompanied by 2 assistants and recording equipment. Manga, it's a pleasure to meet you, Dr. Sergio said, extending his hand to the boy. Likewise, doctor. I would love to observe a session of your work with Ana Sofia, if you allow it. The session occurred naturally, with Manga explaining each movement and technique he used. Dr. Sergio Valdez took constant notes, impressed by the precision and anatomical knowledge demonstrated by the boy. Manga, where exactly did your grandmother learn these techniques? She said it came from her family, doctor. Your grandmother already did them, and your grandmother's grandmother too. It's something passed down from generation to generation. And you're sure there was no formal medical training in the family? Sure, doctor. My family was always poor. No one ever studied medicine, but they always knew how to heal. Dr. Sergio Valdez was fascinated. What you do combines elements of Eastern acupressure, foot reflexology, therapeutic massage, and phytotherapy. It's impressive how your family intuitively developed these techniques. My grandmother said that nature teaches, doctor. You just have to know how to listen. Manga, I'd like to make you a proposal. How about we scientifically document your methods? Could it help many other children? How so, doctor? We'll conduct controlled studies, measure the results, publish scientific articles. Your knowledge could be taught to physiotherapists and doctors worldwide. Manga looked at Alejandro and Monica for guidance. Son, the decision is yours, said Alejandro, but think of the good this could do. If it will help other children like Ana Sofia, then I accept, said Manga with his usual simplicity. The following months were intense. A team of researchers began to frequent the Villarreal's house regularly, documenting everything Manga did. The boy had to learn to scientifically explain techniques he had always done intuitively. Manga, asked one of the researchers, Doctor, Gabriela, why do you press specifically on this point of the foot? Because my grandmother said there's a little nerve that goes all the way to the leg, doctor. Interesting. This point corresponds exactly to the liver meridian in traditional Chinese medicine, which is related to tendons and muscles. So, my grandmother was right. Not only right, but far ahead of her time. During this period, Ana Sofia continued to improve gradually. She could now run short distances, climb stairs, and even ride a bicycle with training wheels. Manga, she said one afternoon while they were playing in the garden, thank you for teaching me to walk again. You did all the effort, little sister. I just helped a little. But without you, I never would have managed. The boy smiled, remembering his grandmother's words. Do you know what my grandmother used to say? That we don't cure anyone,
We just help the person to cure themselves. Your grandmother was very wise. Yes, she was, and I know she's happy watching you run around. 6 months after the research began, Dr. Sergio Valdez called the family for an important meeting. We have extraordinary preliminary results, he announced. Manga's methods show efficacy in 78% of the tested cases. That's higher than many conventional treatments. Alejandro was impressed. And now we want to propose something bigger, a research and treatment institute specializing in combining traditional methods with modern medicine. Manga would be the lead consultant. A whole institute? Yes, with your authorization. Of course, it would be a way to honor Manga's grandmother's memory and help thousands of children. Manga was silent for a moment. May I make one condition, doctor? Of course. What is it? That the institute be free for poor families. That every child can be treated, regardless of whether they have money or not. Dr. Sergio Valdez smiled. Manga, you never cease to impress me. That's exactly what we intend to do. The construction of the Remedios Institute, in honor of Manga's grandmother, took 2 years. During this time, Manga continued to study, learning about anatomy, neurology, and physiotherapy, always keeping alive the essence of his grandmother's teachings. Ana Sofia, now 8 years old, had become a completely normal child, running, jumping, and playing like any child her age. She frequently accompanied Manga when he attended to other children, serving as a living example that recovery was possible. Manga, she said one afternoon, watching a session with a girl who had arrived at the institute in a wheelchair. Do you think she will be able to walk too? I'm sure of it, little sister. Every child is a different case, but with love and patience, there's always a way. The institute's inauguration day was emotional. Hundreds of families with children with motor problems came from all over Mexico to learn about Manga's work. The boy, now 10 years old, was nervous but determined. Manga, said Alejandro moments before the ceremony, your grandmother would be very proud of you today. I hope so, Dad. I hope I'm doing the right thing. I'm sure you are, son. During the opening ceremony, Manga was invited to speak. Although still a child, his presence on stage was impressive. My name is Manga Reyes Villarreal, he began, his voice firm. And I want to tell you about my grandmother, Doña Remedios. He spoke about the teachings he had received, about the importance of love and patience in the healing process, and about how traditional medicine and modern medicine could work together. This institute is not just mine, he concluded. It belongs to all the families who believe that love can heal. It belongs to all the children who don't give up on dreaming of walking. And it belongs to my grandmother, who taught me that the best medicine in the world is affection. The applause was deafening. In the audience, Ana Sofia applauded enthusiastically. Alejandro and Monica cried with pride, and Dr. Elena shook her head in admiration. In the first 6 months of operation, the institute served more than 200 children. The results were impressive. More than half showed significant improvements, and many achieved complete recovery of movement. Manga had become a small celebrity, but he remained the same humble and dedicated child as always. He woke up early every day to attend to the children, studied in the afternoons, and spent his nights planning new treatments. Manga, said Monica one night as they had dinner as a family, you don't want to play anymore. You only live thinking about the institute. But I like what I do, Mom. When I see a child take their first steps, it's better than any game. I understand, son, but it's important that you also have time to be a child. Alejandro agreed. Your mother is right. What if we organize a family vacation? We haven't traveled in a long time. Can I bring some children from the institute? Asked Manga, always thinking of his patients. Everyone laughed. It was impossible to separate Manga from his work. Manga's first big birthday party as a member of the Villarreal family was unforgettable. Alejandro and Monica organized a celebration at the institute, inviting all the children in treatment and their families. Manga had only asked for one thing as a gift: that each family plant a tree in the institute's garden, creating a forest of hope. Why trees, Manga? Asked Ana Sofia. Because my grandmother said that trees grow slowly, but they become strong and provide shade for others. I want the institute to be like that, growing slowly, but helping many people. During the party, something happened that would mark Manga's life forever. An elderly woman with completely white hair and kind eyes approached him. Manga, my name is Socorro. I was friends with your grandmother, Remedios. The boy's eyes widened. You knew my grandmother? Very well. We worked together in the community for over 20 years. When I heard your story, I came here to meet you. Are you also a healer? I was. Now I'm retired.
she said, smiling. But I came to bring you something. Doña Socorro opened an old bag and took out a thick, leather-bound book. Your grandmother asked me to keep this. She said you would need it someday. Manga took the book with reverence. It was heavy and smelled of herbs and thyme. What is it? It's all the knowledge your grandmother gathered throughout her life. Recipes, techniques, stories of healings. She spent years writing this, always saying it was for you. Manga opened the book and saw page after page of handwriting in Doña Remedios's careful script. There were drawings of plants, diagrams of pressure points, and detailed accounts of treatments. She wrote all this for me. She said you had a special gift, that you would help many people. It seems she was right. Manga hugged the book to his chest, feeling a deep connection with his grandmother. Thank you, Doña Socorro. This is the best gift I could receive. Your grandmother also sent a message. Never forget where you come from, and always use that knowledge with love. You can rest assured, I promise. That night, Manga stayed up late, reading his grandmother's book. He discovered techniques he didn't know, fascinating stories of healings, and advice on how to deal with difficult cases. On one of the pages, he found a letter addressed to him. My dear Manga, if you are reading this, it means you have found your path in life. I always knew you had something special. It's not just the gift of healing, it's the gift of loving people and wanting to help. This book contains everything I learned in my life. Use it wisely. Always remember, we don't heal anyone. We just help the body remember how to heal itself. Be humble, be kind, and never charge for your gifts. Healing is a gift from God to be shared with those in need. I am proud of you, my grandson. Even though you cannot see me, I am always by your side. With love, Grandma Remedios. Manga cried as he read the letter. He felt as if his grandmother were there in the room with him, giving him her last advice. Thank you, Grandma, he whispered. I will make sure you are always proud of me. The next day, Manga showed the book to Dr. Sergio and his team. The researchers were fascinated by the wealth of information it contained. Manga, this is a treasure of traditional medicine, said Dr. Sergio. Your grandmother documented knowledge that could have been lost for generations. She was very wise, Doctor. With your permission, we would like to study this book and incorporate some of these techniques into our treatment protocols. You can study it freely. Doctor, my grandmother wrote this to help people. The more people know, the better. The discoveries from Doña Remedios's book further revolutionized the Institute's methods. New techniques were incorporated, and the results were even better. Manga began to train other therapists, teaching them not only the physical techniques but also the importance of affection and patience in treatment. Remember, he would say during training, you are not just manipulating the child's body, you are touching their heart, and that makes all the difference. Bhagchar, Gyan ka prasar. 2 years after the Institute's inauguration, a case arrived that would test all of Manga's knowledge. A 6-year-old girl named Jimena had suffered a car accident that severely compromised her spinal cord. Doctors had said she would never walk again. Manga, said the girl's mother, Doña Marta, tears in her eyes. I've heard about your work. Please, help my daughter. Manga carefully examined Jimena's case. It was more severe than anything he had treated before, but something in the determined look of the girl made him believe it was worth trying. Jimena, do you really want to try? It will be difficult, and sometimes it will hurt. Yes, I want to, Uncle Manga. I really want to walk again to play with my friends. Then, let's try, but you need to be very patient with me. Okay. Jimena's treatment was the most challenging of Manga's career. He had to adapt several techniques, create new combinations of medicinal plants, and work in direct collaboration with a team of neurosurgeons. Manga, said Dr. Sergio in a meeting, this case is extremely complex. Perhaps it's best. Doctor, my grandmother always said, we shouldn't give up until we've tried everything. Jimena wants to try. Her family wants to try. So, let's try. But what if it doesn't work? You can't feel responsible for everything. I won't feel responsible, doctor. I'll feel proud for having tried. It's different. Jimena's treatment lasted 6 intense months. There were days when it seemed she was improving, others when she seemed to regress. Manga adapted his own routine to dedicate more time to the girl, working with her morning and afternoon. Ana Sofia frequently accompanied her brother in these sessions, talking to Jimena and sharing her own recovery story. Jimena, she would say, I also couldn't walk for a long time, but Manga never gives up. If you don't give up either, you'll succeed. Are you sure, Ana Sofia? Yes, I'm sure. Manga has something special in his hands. My mom says it's love, and love always works.
In the 5th month of treatment, the first sign of improvement occurred. During a massage, Jimena felt a slight sensation in her left foot. "Uncle Manga, I felt it. I felt you touch my foot." Everyone in the room fell silent. It was the first sign of neurological response since the accident. "Are you sure, Jimena?" "Sure. Do it again." Manga repeated the movement, gently pressing a specific point on the girl's foot. "Ah, I felt it again." Tears streamed down Doña Marta's face. After months of despair, there was finally a glimmer of hope. "Manga, is it too soon to celebrate?" "Doña Marta, it's a very good sign. It means not all is lost." From that day on, Jimena's improvements were gradual but constant. First, she regained sensation in both legs. Then, she could move her toes. Then, she bent her knees. "Uncle Manga," she asked in a session, "why didn't you give up on me?" "The other doctors said I would never walk again." "Because, Jimena, my grandmother taught me that as long as there is life, there is hope, and you have a lot of life within you. And your grandmother was right. She always was. She was the wisest person I ever knew." In the 6th month of treatment, the most exciting moment arrived. Jimena was strong enough to try standing with support. The day was marked as a special occasion. The entire institute staff was present, as well as Jimena's family and many other families who were following the case. Manga prepared a special massage session using all the techniques he had learned, including some from his grandmother's secret book. "Ready, princess." "Ready, Uncle Manga." With great care, Manga and 2 physiotherapists helped Jimena to stand up. Her legs trembled with the effort, but they held her weight. "My God, I'm standing. I'm really standing." "Mom, I'm standing." Doña Marta ran to hug her daughter, crying with joy. "Now let's try a step," asked Manga. "Let's go." Jimena concentrated intensely and managed to take a small but firm step with her left leg. "I did it, Uncle Manga. I did it." The entire institute erupted in applause. It was one of the most emotional moments in the place's history. Dr. Sergio, who had followed the entire process, shook his head in admiration. "Manga, what you have achieved here defies all medical predictions. This case will be studied for years. The important thing isn't to study it, doctor. It's that Jimena did it. That she will be able to play with her friends again." Jimena's success brought even more recognition to Manga's work. Doctors from other countries began to visit the institute, wanting to learn the techniques he had developed. "Manga," said Alejandro one evening, "you've become famous all over the world. How do you feel?" "Strange, Dad. Sometimes I think people exaggerate. I just do what my grandmother taught me. But son, what you do helps many people. It's natural for it to be recognized." "I know. I just don't want fame to change who I am. I want to remain the same Manga who arrived here that morning." Monica approached and hugged her son. "You'll never change, Manga. You have a beautiful heart, and that doesn't change with fame or money." "Thank you, Mom. You taught me so much about love and family. Without you, I never would have made it this far." Alejandro smiled. "We are the lucky ones to have you as our son, Manga. You brought light into our lives, and you brought a home into mine. We are a real family." Ana Sofia, who had heard the conversation from the living room, ran to join the family hug. "And what did I bring?" she asked playfully. "You brought joy, little sister," said Manga, ruffling her hair. "And you were the one who gave me the first opportunity to help someone. So, everything was planned by destiny, wasn't it?" "I think so, Ana Sofia. I think so." 5 years after the Institute's inauguration, Manga had become a 15-year-old teenager, tall for his age, but maintaining the same humility and dedication. The Institute now had branches in 3 cities and had trained more than 100 therapists. "Manga," said Dr. Sergio in a meeting, "we received a very special invitation." "What kind of invitation, doctor?" "The World Health Organization wants you to present your methods at an international congress in Geneva." Manga was surprised. "In Switzerland? But doctor, I've never left Mexico." "It would be an incredible opportunity to showcase your work to the world. Imagine how many children could be helped." Manga spoke to his family about the invitation. "What do you think?" "I think you should go," said Alejandro. "It's an opportunity to honor your grandmother's memory worldwide." "But what about the Institute? And the children in treatment?" "The Institute will continue to operate," said Monica. "And it's only for a week. When you return, you can apply everything you learn there." "Ana Sofia, what do you think?" "I think you should go, Manga, but promise you'll come back soon." "I'll miss you." "I promise, little sister. A week passes quickly." The trip to Geneva was Manga's first time leaving Mexico. He was impressed by the snow-capped mountains and the organization of the Congress.
His presentation was an absolute success. Doctors and researchers from all over the world were fascinated by the combination of traditional Mexican techniques with modern scientific methods. "Dr. Manga," said a Japanese doctor after the presentation, "your techniques have impressive similarities to the traditional medicine of my country." "That's very interesting, doctor. Perhaps ancient wisdom is similar all over the world." "Exactly. The human body is the same everywhere. The techniques to heal it should also be universal." During the Congress, Manga met doctors, researchers, and therapists from dozens of countries. Everyone wanted to learn his techniques and take the knowledge back to their countries. "Manga," said a French doctor, "would you be willing to come and train our team in Paris? And how about visiting our clinic in London?" asked an English doctor. "Our university in Toronto would be delighted to have you as a visiting professor," said a Canadian. Manga felt flattered, but also a little confused. "Doctors, I am very pleased with your interest, but my work is in Mexico. That's where the children I attend are. But Manga, think of how many children you could help if you expanded your work to other countries." That night, in the Geneva hotel, Manga called home. "Dad, I don't know what to do. Many people want me to go to other countries." "And do you want to go, son?" "I don't know. I think about Grandma Remedios. She always worked in her community. She never wanted to be famous." "But Manga, perhaps your mission is different from hers. Perhaps you have to spread that knowledge throughout the world. And you and Mom, what do you think?" "We think you should do what your heart tells you. But remember that you will always have a home here with us." "And Anna Sophia? How is she?" "Missing you, but proud of her brother. She said you are the most important child in the world." Manga smiled, feeling a sense of nostalgia for home. "Dad, I think I know what I'm going to do." On the last day of the Congress, Manga made an announcement that surprised everyone. "Doctors, first I want to thank you for your affection, but I have decided that my place is in Mexico, helping the children of my community." There were murmurs of disappointment among the audience. "But," Manga continued, "I am willing to train doctors from your countries in Mexico. You can send teams to our institute. That way, you will learn the techniques and take them to your countries." The proposal was met with enthusiasm. It was a solution that allowed the knowledge to expand without taking Manga away from his environment. Furthermore, he added, "We will create an exchange program. Mexican doctors can go to your countries to teach, and doctors from your countries can come to learn with us." The applause was deafening. Manga had found a way to honor his grandmother's memory and, at the same time, expand his knowledge to the world. When he returned to Mexico, he was greeted as a hero at the airport. Dozens of families were there with thank you signs. "Manga! Manga!" shouted the children he had treated. Ana Sofia ran to hug him. "Did you miss home a lot, brother?" "Oh, how I missed it. I can't wait to get back to the institute." "I have a surprise for you," she said, smiling mysteriously. "What surprise?" "While you were away, I started learning your massages with Dr. Elena. I want to help at the institute too." Manga was moved. "Really? Ana Sofia? Really? You cured me. Now I want to help cure other children. Grandma Remedios would be very proud of us both." "She would. Yes. We are a family of healers now." In the following months, the institute received doctors from 17 different countries. Manga patiently and dedicatedly trained each group, always emphasizing that the techniques only worked when applied with love. "Remember," he would say during training, "you are touching not only the child's body but their soul. That makes all the difference." A German doctor asked, "Manga, how do you maintain that positive energy all the time?" "It's simple, doctor. Every time I see a child take their first steps, I remember why I'm here. That gives me the energy to continue." Ana Sofia had become an excellent assistant. At 12 years old, she had mastered several basic techniques and had a special way with younger children. "Manga," she said one afternoon, after helping a 4-year-old girl take her first steps. "I think I understand why you like this job so much." "Why?" "Because when you help someone walk, it's like you're helping the whole family be happy again." Manga smiled proudly at his sister. "That's exactly it, Ana Sofia. You understood everything. I learned from the best teacher in the world. We both learned from Grandma Remedios. She was the true teacher." 10 years had passed since the day Manga appeared at the gates of the Villarreal mansion. He was now an 18-year-old young man, a high school graduate, and about to enter medical school. "Manga," said Alejandro one morning during breakfast, "are you sure you want to study medicine? You already know more about healing than many licensed doctors." "Yes, I want to, Dad. I want to scientifically understand everything I do. That way, I can teach others better."
And will you continue working at the institute? Of course, the institute is my life. I just want to improve what I already do even more. Monica smiled, proud of her son. Your grandmother would be very happy to know you're officially becoming a doctor. I think she already knew, Mom. Grandma Remedios was very wise. I'm sure she predicted all of this. Ana Sofia, now a beautiful and intelligent 15-year-old teenager, had also decided to pursue a medical career. Manga, she said, do you think we are similar to our grandmother? I think so, little sister. She always said that the gift of healing passes from generation to generation. Perhaps we inherited it from her. But we're not blood relatives. That's not necessary, Ana Sofia. Family is who you choose to love, and love also passes from person to person. On the day of Manga's high school graduation, the entire family was present. Alejandro had organized a party at the institute, inviting all the children and families who had been treated over the years. During his speech, Manga spoke about the dreams he had for the future. When I was a child, my grandmother used to tell me stories about a place where all sick children could be healed. Back then, I thought it was just a fairy tale. Today, I know that place exists. We built it together. He looked at Ana Sofia, who was in the front row. But we still have a lot of work ahead of us. There are still many children who need our help. There are still many families suffering. Dr. Sergio approached the stage. Manga, on behalf of all the professionals who have worked with you over the years, I want to say that you have revolutionized our way of seeing medicine. You taught us that healing is an act of love. Thank you, doctor. But the one who taught me that was my Grandma Remedios. I just passed on what I learned from her. That night, after all the guests had left, the Villarreal family gathered in the living room for an intimate conversation. Manga, said Alejandro, I want you to know that you have completely changed our lives. How so, Dad? Before you arrived, our home was sad. Ana Sofia was sick. We were desperate. You brought hope, healing, and love to our family. Monica agreed. And not just to us, son. You changed the lives of hundreds of families. Ana Sofia approached her brother. Manga, can I ask you something? Of course, little sister. Do you regret anything, leaving your life in the popular neighborhood to come live with us? Manga thought for a moment before answering. I don't regret anything, Ana Sofia. My life in the popular neighborhood taught me to value simple things. My life with you taught me that family has nothing to do with money. It has to do with love. And both together made me who I am today. And do you miss Grandma Remedios? I miss her very much, little sister. But I know she is proud of me, and I know that every child I help to walk is a way to honor her memory. I think she is here with us now, said Ana Sofia, looking at the sky through the window. I'm sure she is, replied Manga. She promised she would never leave me alone. Alejandro approached his children. You know that Monica and I can't have more children, right? We know. Then you are our only children, and we couldn't have better children. Manga and Ana Sofia hugged their parents, forming a family united by love and gratitude. Dad, said Manga, may I make a request? Of course, son. Whatever you want. I want my medical degree to have the name Remedios alongside Villarreal. Manga Reyes, Remedios, Villarreal, to honor my grandmother and to honor our family. Alejandro and Monica were moved. Of course you can, son. It will look beautiful. Thank you. That way, every time someone says my name, they will remember the grandmother who taught me everything. Manga's university years were intense. He balanced his medical studies with work at the institute, always learning and always teaching. His professors were impressed by the practical knowledge he demonstrated. Manga, said Dr. Arturo, his neurology professor, you have an instinctive understanding of the nervous system that I have never seen in a student. Professor, I learned by observing and doing. My grandmother said that the body teaches those who know how to listen, and she was right. You should consider specializing in pediatric neurology. That's exactly what I intend to do, Professor. During his studies, Manga continued to receive invitations from universities worldwide. Universities offered full scholarships for postgraduate studies. Clinics offered millionaire salaries, but he always rejected them. Why don't you accept any of those proposals? Asked a classmate. Because my place is here in Mexico. It's here that my family is, my institute, and the children I help. But, Manga, you could earn a lot of money out there. What do I need money for? I already have everything I need. A family that loves me, a job that fulfills me, and the certainty that I am making a difference in people's lives. Ana Sofia had also started university, studying physiotherapy. She wanted to specialize in the techniques Manga had developed. Manga,
she told him one night. "I want to learn all the recipes from Grandma Remedios' book." "Why?" "Because when you are a licensed doctor, you will be very busy. I want to be able to continue the Institute's work with the same techniques." "That's a great idea, little sister. Let's study the book together." In the following months, Manga and Ana Sofia dedicated themselves to meticulously studying Doña Remedios' book. They discovered recipes they had never used, specific techniques for different types of problems, and inspiring stories of ancient healings. "Wow, Manga, your grandmother really knew everything," said Ana Sofia one afternoon after reading about a complex treatment for cerebral palsy. "She was a living encyclopedia, little sister. And now we are the guardians of that knowledge. It's a great responsibility." "It is. But it's a beautiful responsibility. How many people can say they dedicated their lives to helping others?" In his final year of university, Manga decided to write his thesis on the integration between traditional Mexican medicine and modern scientific methods. The work was based on his experience at the Institute and his grandmother's teachings. "Manga," said his advisor, "Dr. Mauricio, this work is revolutionary. You are creating a bridge between two worlds that have always been considered incompatible." "They are not incompatible, Professor. They are complementary. My grandmother always said that there are many paths to reach the same destination." "And what is that destination?" "Healing, Professor. Healing of the body and the soul." The thesis defense was a historic event at the university. The examination committee consisted of renowned doctors, and the auditorium was filled with students, professors, and professionals in the field. Manga presented his work with confidence and passion, showcasing real cases of children who had recovered with his methods. "Mr. Manga," asked one of the examiners, "how do you scientifically explain the success of techniques that have no basis in controlled studies?" "Professor, I believe there is still much we don't know about the human body and its capacity for healing. What my grandmother did intuitively, we are beginning to understand scientifically. Acupressure, reflexology, phytotherapy, all of this has a proven scientific basis." "And what do you call the love factor?" "The love factor, Professor, is what distinguishes a good professional from an exceptional one. When you treat a child with affection, they feel safe. When they feel safe, their body relaxes. When the body relaxes, healing processes work better." The committee was impressed by Manga's maturity and knowledge. "Congratulations, Dr. Manga," said the committee chairman at the end. "You have been approved with honors. This work will be published and will undoubtedly influence future generations of doctors." At the graduation party, the entire Villarreal family was present, as well as hundreds of people who had benefited from Manga's work over the years. Jimena, the girl who had been considered permanently paralyzed, was there, running around the hall like any normal teenager. "Dr. Manga!" she shouted, running to hug him. "I'm so proud of you, Jimena. How you've grown. You are a beautiful young woman, and all thanks to you. Now I can run, dance, do everything I want. It wasn't just thanks to me, Jimena, it was thanks to you for never giving up. It was thanks to your family for believing. And it was thanks to Grandma Remedios who taught me everything." During his graduation speech, Manga moved everyone present. 10 years ago, I was an 8-year-old orphan boy who slept under an overpass. Today, I am a graduate doctor with a family that loves me and a job that fulfills me. This transformation was only possible because people believed in me. Alejandro and Mónica Villarreal gave me a home, Ana Sofia gave me a purpose, and my grandmother Remedios gave me the knowledge to help others. He looked at the sky. "Grandma, if you are listening to me, I want you to know that every child who learns to walk is a tribute to you. Every family that smiles again is a thank you for the teachings you gave me." There wasn't a dry eye in the auditorium. Now, as a licensed doctor, my mission is to expand the Institute's work even further. I want to create a university of integrative medicine where future doctors can learn both modern techniques and traditional wisdom. The applause was deafening. Alejandro and Mónica cried with pride. Ana Sofia smiled radiantly, and hundreds of people celebrated the success of the young man who had changed their lives. After graduation, Manga was sought out by dozens of journalists who wanted to tell his story. "Dr. Manga," asked a reporter, "what is the secret to your success?" "There is no secret," he replied simply. "The secret is that there is no secret. It's treating each child as if they were my sister, each family as if they were my family. It's always remembering where I came from and never forgetting where I want to go." "And where do you want to go?" "I want to reach a world where no child is considered impossible to cure, where no family loses hope, where traditional and modern medicine work together for the good of people." "Do you think that's possible?"
Manga smiled, remembering his grandmother's words. Grandma Remedios always said that everything is possible for those who have faith, love, and persistence. I believe her. So, yes, I believe it's possible. 5 years after his graduation, Dr. Manga Reyes Remedios Villarreal had become a global reference in integrative medicine. His university received students from all continents, and his methods were applied in hospitals worldwide. But for him, the most important thing remained direct work with children. Every morning, before any official commitment, he spent 2 hours at the institute personally attending to his patients. "Doctor," said a mother one morning, "why do you still attend personally? You don't need to do that anymore." "I will always need to do it, madam. It's here that I remember why I became a doctor. It's here that I connect with Grandma Remedios." Ana Sofia, now a licensed physiotherapist specializing in the institute's techniques, had become the clinical director, Manga. She said one afternoon after a particularly emotional session with a child, "You never get tired." "Yes, I get tired, little sister, but then I look at a child taking their first steps. I see the family smile, and all the energy returns. I think Grandma Remedios knew this would happen. I think she knew everything, Ana Sofia. She was special, and we are also special. At least we do special things. We do simple things, with a lot of love. That's what Grandma taught me. Simplicity and love." On the 10th anniversary of Ana Sofia's first successful healing, the entire family gathered in the garden of the mansion where it had all begun. "Do you remember that day?" asked Alejandro, pointing to the gate. "An unknown child appeared there and changed our lives forever." "I remember," said Ana Sofia. "I was in a wheelchair, sad, hopeless, and suddenly an angel appeared in my life." "It wasn't an angel, little sister," Manga laughed. "It was just a scared boy who wanted to help. To me, you were always an angel, Manga, an angel that Grandma Remedios sent to heal me." Monica hugged her 2 children. "You know you are the greatest blessing in my life, right?" "We know, Mom," they replied together. "And you know that you will always be our children, no matter where life takes you." "Always, Mom," said Manga. "This family is the greatest gift I have ever received, even greater than the gift of healing." Alejandro smiled, and to think it all started with a child offering to wash my daughter's feet and a desperate father who decided to give the impossible a chance, completed Monica. "Sometimes the impossible is just the possible in disguise," said Manga, repeating a phrase he had learned from his grandmother. That night, alone in his room, Manga opened Doña Remedios's book and reread the letter she had left him. Even after so many years, the words still moved him. He picked up a pen and wrote at the end of the book, "Grandma Remedios, today marks 10 years since I helped Ana Sofia walk for the first time. In these 10 years, I have treated more than 1,000 children. I have seen hundreds of them take their first steps. I have seen entire families transformed by the power of healing. But the most important thing I have learned is that you were right about everything. Love truly heals, patience truly works, and simple wisdom is more powerful than any technology. Today, I am a doctor, I have a university, I am known worldwide, but I remain the same boy you raised. I still wash feet with affection, give massages with love, and treat each child as if they were family. You taught me that we do not cure anyone, we just help people to heal themselves, and that is what I continue to do every day. Thank you for choosing me to carry on your teachings. I promise they will never die. With eternal love, your grandson, Manga." When he finished writing, Manga felt a gentle breeze enter through the window, as if it were an affectionate hug. He smiled, knowing his grandmother was proud. The next day, a new child arrived at the institute. It was a 6-year-old boy who had lost the movement in his legs after an infection. His parents were desperate, without hope. "Doctor," said the mother with tears in her eyes. "The doctor said my son will never walk again, but I've heard about your work." Manga knelt down to the boy's eye level. "What's your name, champion?" "Gabriel." "Gabriel is a beautiful name, the name of a guardian angel. Do you want to try to walk again, Gabriel?" "Yes, I want to, doctor, I really want to." Manga smiled, remembering himself 10 years ago. "Then let's begin. I'm going to wash your feet with warm water and aromatic plants. It will be pleasant, you'll see." And so, a new cycle began. A new child, a new family, a new opportunity to make a difference. Ana Sofia watched from the doorway, smiling. "It's nice to see you work, brother. It's nice to participate in a miracle, little sister. Even after so many years, I still get emotional. I think that's what makes the difference. You've never lost the ability to get emotional, and you never will." As he prepared the tub with warm water and medicinal plants, Manga whispered a silent prayer.
Grandma Remedios, another child needs our help. Give me strength, wisdom, and a lot of love to care for Gabriel well." And as always happened, he felt a deep peace fill his heart, the certainty that his grandmother was there, guiding his hands and his heart. The end of the story. And you, dear viewer, what did you think of this story of overcoming and love? Tell us in the comments which moment moved you the most, and if you know any similar stories to share with us. Don't forget to leave your like and subscribe to the channel for more heartwarming stories.